Hello everyone, Namaskar. So in this video, I'll be announcing the winners for the giveaway that we had shared a couple of days ago. And naturally, anybody and everybody who had registered for the giveaway will be getting access to our CSAT Test Series worth 2000 rupees for absolutely free because we wanted to say thank you to all of you for trusting us. And on top of that, I had shared that there will be some 50 people who will be selected for getting the Indian Economy Handbook and the AnswerCraft Workbooks as well. So today we'll be doing that selection. And on top of that, I'll also be giving you something more for each and everyone watching this video because we want to give away as much value as we can in order to help your UPSC journey. So let's get started. Right. So first and foremost, giveaway में यहाँ पे list में मैंने सबके नाम डाल दिए हैं, all of the people that had registered for the giveaway. And obviously I don't want to dox them क्योंकि मतलब वहाँ पे email IDs and mobile numbers काफ़ी लोगों ने शेयर किए थे. However, there were some over smart people जिन्होंने मतलब मल्टीपल बार एंट्रीज करी थी तो उनके नाम एक ही बार काउंट किए गए हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर सम एरर्स, देयर वर सम इश्यूज जहाँ पे लोगों ने एड्रेस नहीं डाला था या कुछ भी किया था, तो wherever the data was incomplete, so therefore those entries have been eliminated, and the completed entries one time only have been counted. So the way to game such giveaways is to use multiple emails. This is something that you can reference for the future. So now let me just select the winners, right? And here we have एक button दबाते ही 50 selected winners have been shared over here, and this list will also be available on our Telegram channel. You can go and check out this list over there. वहाँ पे मतलब सबके नाम आपको मिल जाएंगे. Right now obviously मतलब सारे नाम एक साथ दिखाना मुश्किल है because this is a big list, 50 people. Congratulations to all of the winners. You will be मतलब our team will be reaching out to you, and if your address is correct, hopefully you should also be receiving the AnswerCraft workbooks and the Indian Economy Handbook. Now this brings us to the second part. Now second part में what I feel is कि यूपीएससी प्रिपरेशन में लोगों को दो तीन चीज़ों से प्रॉब्लम रहती है, राइट? वन इज अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए आज की डेट में एआई टूल्स एक बहुत बड़ा साधन है, बट एआई टूल्स को यूज करना बहुत लोगों को नहीं आता. तो वी हैव ट्राइड टू मेक दिस सिंपलर फॉर यू, एंड दिस इज वेयर आई एम गोना शेयर द प्रीलिम्स जीपीटी विद यू. नाउ प्रीलिम्स जीपीटी मैंने पिछली भी एक वीडियो में दिखाया था. नाउ दिस इज जस्ट अ टूल दैट वी हैव मेड इन ऑर्डर टू हेल्प योर यूपीएससी जर्नी. And all that you have to do over here is, we'll be sharing the link. This will be in the video description. आप वहां जाओ. तीन चीजें ये आपको करने में मदद करेगा. नंबर वन, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स. नाउ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक तो है कि आप चैट जीपीटी को सीधा बोल दो कि भाई मतलब मुझे समझा दो. दूसरा है कि भाई आपको 2 या 3 लेवल पे वो समझाए कि वन एट क्लास 10 लेवल, वन एट कॉलेज लेवल, एंड इफ यू वांट हायर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो यू कैन आस्क इट टू डू दैट फॉर यू. तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन है विद दिस प्रीलिम्स जीपीटी. देन रिवाइज हार्ड टॉपिक्स. हार्ड टॉपिक्स क्या रहते हैं कि भाई अब मैंने कोई टेस्ट दिया, मैंने कोई गलती करी, तो उस बेसिस पे मतलब मुझे पता रहना चाहिए कि भाई अच्छा इस एरिया में मुझे बार बार दिक्कत आ रही है, एंड देयरफॉर आई एम फेसिंग इश्यूज. फाइनली ट्रैक योर प्रोग्रेस. तो ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स दिस विल हेल्प यू. कैसे आपको इसे यूज करना है? फर्स्ट टाइम व्हेन यू यूजिंग इट, जस्ट प्रेस लेट्स गो. लेट्स गो जब आप इसको करोगे तो ये आपको बता देगा कि भाई क्या क्या चीजें करने का केपेबल है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज इट फॉर. Right. So first interaction पे there is no audit due, meaning every week this chat GPT, if you use it regularly, it will help ask you to do an audit. Audit में क्या होगा कि अच्छा मैंने पिछले हफ्ते में क्या क्या किया है एंड किन चीज़ों में मुझे कंफर्ट है, किन चीज़ों में मुझे कंफर्ट नहीं है. नाउ when we're going for the first session, since there is no audit due, क्योंकि अभी तक जो भी किया है कोई दिक्कत नहीं है. However, there is also something कि यहाँ पे अब क्या कर सकते हो आप कि भाई यू कैन आस्क इट टू रिवाइज डिफिकल्ट टॉपिक्स. लेट्स से फॉर एग्जांपल आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन. तो व्हाट इट विल डू इज कि बेसिकली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इट विल क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड वहां पे अब आपको एक एक करके ये सवाल जवाब करेगा, राइट? एंड इट विल नॉट गिव यू द आंसर डायरेक्टली. इट विल आस्क यू टू गिव द आंसर विद वन लाइन रीजनिंग. क्यों? क्योंकि आंसर कर देना सिर्फ वर्सेस आंसरिंग द करेक्ट थिंग फॉर द राइट रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे अब ये सीधा जब आप गलती करते हो तो सीधा आपको समझाएगा नहीं कि नहीं नहीं ऐसे था. नो, इट विल आस्क यू टू पुश योर सेल्फ कि अच्छा ट्राई करो, अच्छा एलिमिनेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो कैसे, राइट? तो मॉनेटरी पॉलिसी, अब इसको आप जो भी आंसर दे देते हो, यू वांट टू ट्राई एंड गिव वन लाइन गेस रीजन so that it can help you understand the topic more, right? On top of that, now naturally
क्या रहेगा कि people who are using this have made some progress already. तो you can also ask it to help you track and audit your progress. यहाँ पे क्या होगा कि it will ask you कि अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपका कितना कंफर्ट है, राइट? तो what will be tracked from now on? Topics covered, राइट? आप बताओ कि भाई हुआ कि नहीं हुआ. Then a topic is flagged difficult is this is based on the more you use it. जैसे questions हमने करने की कोशिश करी थी, तो अगर बार बार मुझे इन्फ्लेशन के टॉपिक में दिक्कत आ रही है, so then it will keep a track of it, and then with time it will help you understand those topics even more, right? On top of that, the third basic way to use this is that you can ask it directly कि भाई let's say economy में repeated themes क्या हैं, geography में या what are the repeated themes in Indian polity. All that you have to do is this, and जो PYQ analysis वाली जो चीज़ थी, तो काफ़ी हद तक ये आपको करके दे देगा. I would still recommend that you open up the actual papers and go through them. But if you ask it, ये आपको वो questions भी दे देगा क्योंकि पिछले 10 साल का जो डेटा है I've already fed into the system, right? तो इस तरीके से core philosophy, fundamental rights versus state power, parliamentary procedures, president of India, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, so these are all areas which are very high yield, जो बार बार यूपीएससी पूछता है. And again, this is a very simple way in which you can go about doing it, right? So this prelims gpt will be made accessible to you in the video comments. Now I am assuming with this that everybody has access to chat gpt go, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल था. तो यू कैन if you don't have access to it, chatgpt.com पे जाके you can get a go subscription for free, and then you will be able to access this prelims gpt because it uses the latest model, right? So that'll be all for this video. We've announced the giveaway winners, and this is the second thing that I wanted to share with you all. All the best on your UPSC journey. If you face any problems, please do let us know in the comments or on Telegram, or reach out to us on WhatsApp. All the best.